A very good morning, dear student. Welcome back in today's science class. So, dear student, as you know that in the previous class we completed our second chapter. Now, in today's class, we are going to start the new chapter, chapter number 3, that is synthetic fibers and plastic. So, in this chapter, we learn about the polymers, means what are the polymers, how the polymers are formed. We discuss about the synthetic fibers, what are the synthetic fibers, how it is formed, what are the different types of the synthetic fiber, and what are the advantages and disadvantages of using synthetic fibers, what are the main characteristics of a synthetic fiber. That's why in today's era, or in today's the people mostly favor to use the synthetic fiber. Then the synthetic fibers are how it is harmful for this environment, and how it causes the different types of environmental problems. What are the plastics? Then we discuss about the plastics. What are the different types, different forms of the plastics? Okay. So then we also discuss about the using a plastic, how it is have effects on the human life, how it is effect on animals' life, and how it have the effect on the environment, plants, and the fertility of the soil. So, as you know that, dear student, in the previous class we discussed or you study about different types of fibers. Means there are the two different source from where we are obtaining the synthetic fiber. So first that is plants, and the second one is water animals. So plant and animals are the water. These are the source from where we obtain, we extract water, these fibers. But now there are the two different classes of fibers. One the man-made fibers. Second one is the natural fibers. So natural fiber means this fiber. These are classified into natural fiber and synthetic fibers. Natural fiber and synthetic fiber. Natural fiber, this natural fiber we are obtaining from the two sources, plants and animals. From plants we obtain cotton, jute, flax, this hemp, etc., etc. So these are what natural fibers, and these natural fibers we are obtained from water. They are getting this from plant. And second one, animals. Animals are also source of fibers like silk, this wool, etc. So these are there are the two main sources of natural fiber, plant and animals. So we are we are obtaining, or we are obtaining this natural fiber from plants and animals. Means we can say that the plants and animals are the main source of water, this natural fiber. Second, this synthetic fiber. This synthetic fibers are also known as artificial fiber or man-made fiber. So in this artificial fiber, we are discussing about the different type of fibers. In that, rayon, nylon, terracotta, polyester, terylene, and many more. We discuss one by one. So how these are this polyester, plus then
nylons, rayons, in all these above are what synthetic fibers and man-made fiber. So we discuss about this synthetic fiber in this chapter. So before, as you know that in this fibers, mostly these fibers are used for the spinning and manufacturing of clothes and different types of articles which we use in our daily life, like socks. It also useful for the making ropes and parachutes and different type of item. Fishing net is also prepared by the synthetic fibers. Man-made fiber is also useful for water manufacturing and formation of water, different type of clothes and different type of articles, and you know that this bed sheets, pillow covers, curtains, this etc. Many things are made up of this different type of fibers. So now, dear student, everybody see in your textbook, page number 38. First, we are going to discuss about what polymers. Now, this word polymers. This polymers, the word is made up of the two different words. This poly plus mers. So this poly means what? This poly means what? Many. Poly means what? Many. And the mers means units. So when the many units combine together, they form what? Polymers. And this process is called what? Polymerization. So when the small monomers can single unit when combined together and form the long chain, that is called what? That is called polymers. And this process of combining, this is called what? Polymerization. So by the polymerization, the small units, the single units or the monomers combine together and form the long chain, they form what? Polymers. So by the polymers, we form what? Different type of synthetic fibers. So polymers, this poly means many and mers means units. So when the many units combine together, for example, suppose that this is small units combined together, and it forms the bigger unit. This is called what? This is polymer. And this single this unit is called monomers. So this is small monomers or a single unit. When this single unit is called what? Monomers or the single units. When it forms a long chain, this long chain. So this long chain is called what? Polymers. And this process is called what? Polymerization. This process is called what? Polymerization. So I hope you are quite clear for everyone. You understood very well this about the polymers, monomers, single units and polymerization. So everybody see in your textbook, we discussed first about the polymers more in detail from your textbook. So please everybody see in your textbook page number 38. Polymers are the long chain of the molecules. They are in fact the chain of repeating single units or the monomers. The poly means many and the mers means what? The units. The small units or the molecules which is repeated again and again is called what? Monomers. This again and again repeated. So the single unit is called what? Monomers. Okay, single unit is called what? Monomers. When they combine together, it forms a long chain. Then it is called what? Polymers. And this process is called what? Polymerization. So polymers resembles the beads in the stings of the bricks in a ball. Just like polymers, like you see this abacus. In abacus you see the single beads. या फिर आप एक हार में या माला में एक सिंगल फ्लावर्स, तो वो सिंगल फ्लावर हो गया आपका एक सिंगल यूनिट, दैट इज कॉल्ड मोनोमर्स. और बहुत सारी जब पूरी माला बन गई एक से ना हार सा बन गया, दैट इज कॉल्ड वाटर पॉलीमर्स. और ये पूरे बनाने की जो प्रोसेस है मैथड, दिस इज कॉल्ड वाटर पॉलीमराइजेशन. जस्ट लाइक यू सी द सिंगल ब्रिक्स, एक सिंगल ईट से पूरा घर बना, तो सिंगल ईट जो होगी दैट इज कॉल्ड वाटर मोनोमर्स और सिंगल यूनिट्स. और उससे पूरा
बॉल जैसे बनाते तो वो पॉलीमर्स हो गया, और बनाने की प्रोसेस हो गई पॉलीमराइजेशन. So polymers can be the linear or the cross-linear. Polymers, it may be the linked cross-linear and maybe linear. Just like if you see this type of things, that is called a linear polymers. This type के linear means long changes होते हैं, that is called a linear polymers. And second is cross-linear polymers. One is a linear polymers and another second one is a cross-linked polymers. So now you see this is single line, a straight line, or linear line type of polymers is called the linear polymers, and this type zigzag mostly across that is called what a cross-linked polymers. Okay, so there are the two different types of polymers, linear polymers and cross-linked polymers. Okay. So polymers can be made in the laboratory, they can be exist in the nature. The cellulose, hemoglobin, fructose, the proteins in the DNA, etc. are the polymers occurring in the living things. So these are the cellulose is also example of polymers. ये भी polymers है, ये भी small units से combine करके बना है. Hemoglobin is also a polymers. This fructose, this is the type of sugar which is found in the fruits, that is called fructose. So fructose is also a type of water. This polymers means it forms by the small units, polymers. Proteins in the DNA. These all are the examples of a natural water, natural occurring polymers. Cotton, silk, they are also examples of. Cotton is also a example of water. This cotton and silk is also examples of natural polymers. Okay. So maybe question may be asked in like that in exam, that will give you the examples of natural polymers of plants. So what are simple answer cotton and silk. And animals में तो आप this animals, in the case of animals आप hemoglobin लिख सकते हो, this plant cellulose, fructose, protein in DNA. Now next we are discussing about what synthetic fiber. This synthetic fiber is also known as what? Artificial fibers or man-made fibers. These are the fibers which are formed in the laboratory by using the different types of chemicals like petrochemicals, petroleum or coal. तो mostly ये जो synthetic fibers है वो petroleum या coal के use से इनको बनाया जाता है laboratory में. It is synthesized in the laboratory. That's why it is called artificial or man-made fibers. So now see. The synthetic fibers are the man-made polymers. They are synthesized. These are what? Synthesized in the laboratory, just like for example nylon, rayon, polymers, polyesters, terylene, terracotta, acrylic. These all are the examples of what? These are the examples of this synthetic fibers which made by the man in the laboratory by using the different types of chemicals. Okay. Now first we are going to discuss about the rayon. The first is synthetic fiber, that is called rayon. So we are discussing about more about the rayon. This rayon was the first synthetic fibers. Rayon ये first synthetic fiber है, means man या laboratory में scientist ने सबसे first time जो fiber बनाई, that is rayon. Okay. It was synthesized in the end of 19th century. It is synthesized when its time period was the end of the 19th century. It is the popular ever since as a substitute for the silk in the texture. Rayon क्या है, इसे substitution for what is the natural fiber that is called what is silk. बिल्कुल it's a similar को कैसे जैसा इसका जो texture है that is the same like what silk. तो silk का ये क्या है, substitution है, क्योंकि natural fibers जो है काफ़ी expensive है, काफ़ी ज़्यादा नहीं, तो उसको replace करने के लिए for the replacement of this natural fiber that is silk, the scientist or prepare or manufacture or synthesize water artificial or synthetic fiber that is called water
rayon. तो ये क्या एक सिल्क का रिप्लेसमेंट है, ओके. And it is it also called, that's why it is also called it's similar to the what in the texture similar to the silk. That's why it is called the artificial silk. So many times with this question will be asked in exams, name the artificial silk. So सीधा से direct answer क्या है? Rayon. Rayon is known as the artificial silk. For this reason it is also called the artificial silk. The raw material for the manufactures of rayon is wood pulp. Okay, wood pulp, because mostly ये जो है this is made up of wood pulp. So you can say that this rayon is manufactured or synthesized in the laboratory by using water, somewhat by the natural source, that is wood pulp. Means कहीं ना कहीं इसमें भी natural source का यूज होता है इसके फॉर्मेशन में. ये भी completely artificial नहीं है. Okay. So as the raw material is the cellulose of the wood, which itself a polymer, rayon is also called the regenerated fiber. So naturally you see that this raw material is coming from this wood pulp is coming from the wood, and wood is the main source for the cellulose. ना ये cellulose का एक क्या है main source है. तो this is also a polymer, natural polymer. So this rayon is also a polymer. Now manufactures of rayon means how this rayon is manufactured or synthesized in the laboratory. So we more discuss about the process by which it is formed or it is synthesized or manufactured in the laboratory. So now see in your textbook page number 39, the topic manufacture of rayon. Everybody see in your textbook please. The wood pulp is dissolved in an alkaline solutions and a thick liquid is formed. Wood pulp is dissolved in water, alkaline solution. Alkaline solution में wood pulp को dissolve किया जाता है, एक thick paste सा बनाया जाता है, solution सा बनाया जाता है. This liquid is then passed through the tiny holes. और उस liquid को, उस paste को ना, जो liquid paste है उस solution को thick जो thin tiny holes होते हैं, thick liquid को tiny holes से pass किया जाता है. Then it forms this rayon. Okay. Then the fibers coming out of these tiny holes are hardened by the passing them through the sulfuric acid. First ये raw material को pass करते हैं, pass करने के बाद treated with the water, sulfuric acid. It treated with the sulfuric acid as H2SO4. Why it is treated for this H2SO4 और sulfuric acid? Because ये थोड़ा सा हार्ड हो जाए, टफ हो जाए. This take the shape of this water. It's take the shape of this fibers. For the hardening उसको टफ थोड़ा सा हार्ड बनाने के लिए it is treated with the H2SO4. ठीक है. तो वो पेस्ट जो है वो फाइन टाइम होल्स में से पोर्स में से पास किया जाता है, बिल्कुल धागे जैसी संरचना बन जाती है. तो बिल्कुल उसको फिर इसमें डिप किया जाता है. उसको किसके साथ ट्रीट किया जाता है? ट्रीटेड विद H2SO4. H2SO4 के साथ इसको ट्रीटेड किया जाता है और इट बिकेम वाटर, फिर फाइबर का शेप ले लेता है. ओके. Then after these fibers are hardened, sorry, they are spun into yarns and further woven into the fabrics. फिर उसके धागे बनाए जाते हैं और उससे फिर क्या बनाए जाते हैं? फैब्रिक्स बनाए जाते हैं. क्लोथ्स मैन्युफैक्चरिंग में और अदर इंडस्ट्रीज में यूज किए जाते हैं. As it is made from the cellulose, it absorb the sweat. Means ये sweating को ज़्यादा, तो पसीने को ज़्यादा absorb करता है. Because it is made up of what? Cellulose. और cellulose is it's a natural fibers है, तो natural polymers है. तो ये ज़्यादा से ज़्यादा, यानी कि rayon जो है वो ज़्यादा sweating को, पसीने को absorb करता है, पानी को सोख सकता है. Okay. It can be, these are the what properties. Okay. It can be dyed in a various color. ये अलग-अलग different varieties of colors can be taken by this rayon. यानी rayon को आपके अलग-अलग कलर में आप क्या उससे डाई कर सकते हो, कलर कर सकते हो, और अलग-अलग टाइप की वैरायटीज आप, कलर की वैरायटीज आप अवेलेबल हो सकती है, आप उसको बना सकते हो. It is wrinkle free and moth resistant. So the main important characteristics of all these synthetic fiber is this one, the third one, this wrinkle free. means इसमें सलवटें नहीं होती, आप कैसे भी इसको रख दो, हाँ
there will be no wrinkles in this is the clothes which is made up of this synthetic fiber. एक आपका कॉटन का कपड़ा होता है तो उनको आप कैसे उसमें प्रेस करना आयरन करना जरूरी होता है ना, क्योंकि उसमें ना सर्वडे रिंकल्स हो जाते हैं। लेकिन जितने भी सिंथेटिक फाइबर्स हैं वो क्या होते हैं, आप उसको कैसे भी करके बिल्कुल लाइट इन वेट होते हैं, वेरी इजीली ड्राई इन सनलाइट, हाँ काफ़ी जल्दी सूख जाते हैं, काफ़ी लाइट होते हैं, आप कैसे भी उसको यूज़ कर सकते हो, हाँ तो रिंकल फ्री होते हैं। एंड देन नेक्स्ट वन इज मॉथ रेसिस्टेंस, मीन्स इस पर इंसेक्ट या किसी भी टाइप के जो कीड़े हैं वो उस पर इस टाइप के सिंथेटिक फाइबर पे अटैक नहीं कर सकते, ये डेस्ट्रॉय नहीं करके स्पॉइल नहीं कर सकते। बट इन द केस ऑफ कॉटन सिल्क, इस पे इजीली जो है कोई भी इंसेक्ट है, हाँ कीड़े हैं उस पर लग जाएंगे और उस क्लोथ क्या कर देंगे, डेस्ट्रॉय कर देंगे, स्पॉइल कर देंगे। नाउ यूजेज ऑफ रेयॉन मीन्स वेयर वी यूज दिस रेयॉन, रेयॉन कहाँ पे यूज में लाया जाता है। So it is used for the making or manufacturing of water, the garments such as the sports wears, jackets, suits, socks, stockings, हाँ तो ये जितने भी जो ट्रैक सूट आप देखते हैं स्पोर्ट्स वियर्स होते हैं, है ना, ट्रैक सूट है आपका, अपर है, लोअर है, स्पोर्ट्स निकर है, हाफ पैंट है ना, जैकेट्स, सूट्स, स्विमिंग सूट्स है, सॉक्स है आपके, हाँ जुराब, मोजे है, स्टॉकिंग्स है, दिस ऑल आर द आइटम्स आर्टिकल्स आर मैन्युफैक्चर्ड और मेड बाय दिस वाटर रेयॉन बाय यूजिंग द रेयॉन। इट इज यूज्ड इन मेकिंग द होम फर्निशिंग्स such as the curtains, bed sheet, bed strips, bed sheets, carpets, table clothes, जो घर में आप जो नॉर्मल क्लोथ्स यूज़ करते हैं, कर्टन यूज़ करते हैं, पर्दे यूज़ करते हैं, टेबल टॉप यूज़ करते हैं आप, है ना, बेड शीट्स यूज़ करते हैं, पिलो कवर्स यूज़ करते हैं, दिस ऑल थिंग्स आर मेड अप ऑफ यूजिंग वाटर दिस रेयॉन। It is used as a cheaper substitute for the silk in making the fabrics, dresses and the sari। और एक तरह से ये इसका substitution, दिस आर द substitution for the silk। और सिल्क जो है काफ़ी एक्सपेंसिव है, यू नो दिस सिल्क इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव फाइबर, सो उसके सब्सटीट्यूट उसके जैसा ही टेक्सचर कौन प्रोवाइड करता है, दिस रेयॉन, एंड दिस इज द चीपर देन वाटर सिल्क। नेचुरल सिल्क जो है उसके कंपेयर में आर्टिफिशियल सिल्क यानी रेयॉन जो है वो चीपर सस्ता है और उसके जैसा ही आपको क्या ड्रेसिंग्स देता है, जैसे कि उसी टाइप की नायलॉन जैसी ही, सॉरी दिस सिल्क जैसी ही जो रेयॉन की भी साड़ी और दूसरे गारमेंट्स और ड्रेसेस मिलते हैं। सो इट्स व्हाट यू कैन से दैट इट्स अ रिप्लेसमेंट ऑफ वाटर सिल्क। सो दिस इज ऑल अबाउट वाटर रेयॉन। देन नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट द नायलॉन। सेकेंड जो फाइबर है the synthetic second fiber, that is what nylon. This nylon is made up of the two words and one is New York and O and means London. So first fiber is derived in the water, two cities of Britain, that is called New York and London. So ब्रिटेन की टू फेमस सिटी न्यूयॉर्क और लंदन से इसको फर्स्ट टाइम डेराइव किया गया, दैट इज नायलॉन। ओके, सो नायलॉन इज द फर्स्ट द सिंथेटिक फाइबर मेड कंप्लीटली फ्रॉम द केमिकल्स। नाउ यू सी दैट फर्स्ट जो हमने रेयॉन डिस्कस किया, दैट इज मेड अप ऑफ द रॉ मटेरियल, दैट इज कॉल्ड वुड पल्प एंड दैट कम्स फ्रॉम वाटर प्लांट्स, एंड प्लांट इज यू नो दैट इज द सोर्स ऑफ सेल्यूलोज। Okay, but now here this nylon is completely synthetic fiber which is made up of a chemical। उसमें फिर भी नेचुरल सब्सटेंस था, वुड पल्प था, है ना, सेल्यूलोज का पार्ट था, बट ये जो है वो completely made up of chemicals। Which one? This nylon। So it was made in the year of 1931। ये जो है वो कब बना? 1931। This is derived or extract or synthesized or formed in the year 1931 in the two famous cities, New York and London. That's why it's called nylon, and it's first synthetic fiber which is completely made from the chemicals. Now see the manufacturing, how the manufacturing or this formations of nylon is taking place. Now see everybody in your textbook this topic nylon. So we are going to discuss about the manufacturing of this synthetic fiber, that is nylon.
So the raw material required for the making nylon are the coal, water, and air. This is made up of water. This coal, air, and this water. These are the raw material for water. These are this coal, air, and water are the raw material for water. This synthetic fiber nylon. इस nylon जो है वो coal से, air से and water से इसको बनाया जाता है. The complex chemical reactions are carried out by a very high temperature of synthesize the molten nylon. This molten liquid is then passed through the spinners to form the fibers. The spinners are then the molten liquid. There are the metal plates or the cups with the tiny holes through which the molten liquid is passed. यानी ये जो लिक्विड होता है उसको एक स्पिनर्स होते हैं उनसे पास कराया जाता है और उनमें क्या होते हैं मेटल के कप्स बने होते हैं या प्लेट्स बने होते हैं. वो उसमें स्मॉल स्मॉल क्या होते हैं होल्स होते हैं जिसके थ्रू ये पास होता है एंड फॉर्म्स लाइक फाइबर्स के धागे की जैसे ये संरचना बन जाती है. हाँ, then it forces out to form the continuous filaments of the nylon. These filaments are further spun into the fabrics और इन्हीं फिर धागों को फिर वापस स्पन किया जाता है और इससे क्या बनाया जाता है फैब्रिक्स बनाया जाता है, क्लोथ्स बनाया जाता है. Now next we are going to discuss the properties of nylon. Means what are the basic characteristics or the properties of nylon by which it's more popular among the people or so it is very strong yet the light and durable. कि काफ़ी strong है, ये काफ़ी strong है यानी काफ़ी खींचेगा आप कभी ये नहीं टूटेगा और उसके बावजूद ये क्या है इट्स वेरी लाइट इन वेट एंड ड्यूरेबल. मीन्स इजी टू पोर्टेबल. आप कहीं पे भी इसको यूज़ कर सकते हो किसी भी तरह से. आप यू नो दैट नायलॉन का एक बड़ा सा कपड़ा है तो भी उसको आप कैसे भी इतना सब करके आप अपने पॉकेट में रख सकते हो और इसका कोई वेट भी नहीं होता है ना. नायलॉन के जो टॉप्स आते हैं या शर्ट्स आते हैं या फिर साड़ीज आती है बिल्कुल लाइट इन वेट होती है, हल्की सी होती है. हाँ, उसको आप समेट के रखोगे तो इतना सा बन जाएगा बस. हाँ, वो ज़्यादा स्पेस कवर नहीं करेगा और भारी भी नहीं होगा. ओके, इट इज़ अ हाईली इलास्टिक. इसमें इलास्टिसिटी भी होती है. इट्स हैव द प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी. इट एब्जॉर्ब द लेस वाटर बट इट एब्जॉर्ब द लेस वाटर. मीन्स इसका डिसएडवांटेज है कि ये जिस तरह से ना जिस रेवन एब्जॉर्ब स्वेट्स पसीने को एब्जॉर्ब करता था इसी तरह से वाटर को एब्जॉर्ब होता है. दिस नायलॉन इज नॉट एब्जॉर्ब टू मच वाटर एज कंपेयर टू दिस रेवन. सो इट एब्जॉर्ब द लेस वाटर देयरफॉर इट इज ड्राइज वेरी क्विकली और जल्दी सूख जाता है. आपने धोया और 2 मिनट में वो बाहर आप सूखा तो जल्दी से सूख जाएगा. इट इज़ ऑल्सो प्रिंकल फ्री एंड इट हैज़ द लचर्स. मीन्स इसमें भी अच्छी सी शाइन होती है. हाँ, इसमें भी जो है क्या ब्राइटनेस होता है, शाइनिंग होती है और ये भी वेरियस टाइप ऑफ कलर्स आर अवेलेबल फॉर दिस नायलॉन. सो दिस ऑल आर द प्रॉपर्टीज ऑफ नायलॉन. नाउ नेक्स्ट द यूजेज ऑफ नायलॉन. नायलॉन भी काफ़ी यूज होते हैं. नायलॉन की रोप्स होते हैं. द नायलॉन रोप्स आर यूज फॉर पैराशूट्स और यू कैन सी दिस माउंटेनियर्स जो रोप्स यूज़ करते हैं या नायलॉन के थ्रेड्स होते हैं. सो नायलॉन इज यूज फॉर मेकिंग ब्रिस्टल्स, टूथब्रशेज, पेन ब्रशेज, हेयर ब्रशेज. जो भी ब्रशेज होते हैं, पेन ब्रश हो या टूथब्रश हो, दिस ऑल इसके जो ब्रिस्टल्स होते हैं, दिस ब्रिस्टल्स आर फॉर्म्ड बाय दिस नायलॉन. ओके, सो नायलॉन इज यूज्ड इन फॉर्मेशन और मेकिंग ब्रिस्टल्स ऑफ द टूथपेस्ट, कलर पेस्ट, दिस पेन ब्रशेज और हेयर ब्रशेज. It is used in making the parachutes, fishing nets, tents, ropes. Fishing nets है, ropes है, tents है, parachute है. This all articles, this all things are made up of using this nylon. Nylon it is used in a variety of garments such as the sports wears, sarees, dress materials, jackets. कपड़े भी इनसे बनाए जाते हैं, sports wears बनाए जाते हैं, parachutes बनाए भी जाते हैं, sarees है, dresses है, jackets है. This all things are made up of water. By using this nylon. Then it is most popularly used for making the stockings and socks. यानी ज़्यादा से socks और stockings जो बनाए जाते हैं they are made of this
nylon. So mostly this stockings and the socks are formed by this water nylon. Next, nylon is also used in making the machine parts, jeep fasteners, combs. These are the some other parts which is formed by this water by using this nylon. Now next, the synthetic fiber about which we are discussing, that is called what? That is a polyester. So this polyester word is formed by the two words poly plus ester. Means when the ester monomers, ester का एक सिंपल या सिंगल यूनिट्स को आप पॉलीमराइजेशन से क्या बनाते हैं? पॉलिस्टर. Polyester means the polymerization of water ester. Okay. So this poly plus ester. So क्या बना? Polyester. Okay. So this ester क्या है? This ester is a monomer. This polyester is a water monomer or a single unit. So सिंगल जो ईस्टर के जो स्मॉल मोनोमर्स है वो आपस में कंबाइन करते हैं इट फॉर्म्स द लॉन्ग चेन दैट इज कॉल्ड व्हाट? पॉलिस्टर. एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड polymerization. So polyester is another type of polymers and the synthetic fibers made from the petroleum product, and it is formed by what? Petroleum product. It is formed by the petroleum. Okay, it is formed by the petroleum product. It is a polymers of the esters. ये किसका पॉलीमर्स है? दिस इज द पॉलीमर्स ऑफ ईस्टर. यानी ईस्टर के सिंपल यूनिट्स को आपस में एक लॉन्ग चेन बनेगा दैट फॉर्म इट्स पॉलिस्टर. टेरिलिन एंड डेक्रॉन्स आर द सम ऑफ द मोस्ट कॉमन वेराइटीज ऑफ द पॉलिस्टर. इसके जो मोस्ट कॉमन वेराइटीज है वो क्या है आपका? फर्स्ट वन इज टेरिलिन. टेरिलिन इसका आता है और डेक्रॉन. Terylene and Decron are the two famous varieties of this polyester. Polyester is a wrinkle free. इसका भी characteristic है, it is a wrinkle free, strong, light in weight, lasting. Almost जितने भी synthetic fiber है इनकी property जो वो similar है. ये सभी wrinkle free होंगे, light in weight, durable and easy dry ना. सनलाइट में काफ़ी जल्दी सूख जाते हैं, wrinkle free होते हैं, light in weight होते हैं, durables होते हैं. So due to these properties, the polyester is used in extensively used in the textile industry. इसी properties के कारण ये ज़्यादा famous है इन textile industries है ना, कपड़ों की फैक्ट्रियों में. Now uses of polyester कि polyester कहाँ पे use होते हैं. Then it is used to making the garments such as the trousers, shirts, suits and other clothes. It is blended with the other